किस कोन कंदुस ये जेको आहे इतां ई था शुरू करियूं छा पे चयो पाण चयो पे CLOs so जेको बि इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स आहिनि image processing, all the image processing, the complicated image processing जेका या signal processing, all the signal operations like in लाइकी इस्तेमाल कंदा आहियो मोबाइल फोन में इमेज जूं एप्स हूंदियूं आहिनि यूज़ कंदा आहियो फोटो सर हूंदियूं आहिनि जेपीजी फोटोग्राफ पीएनजी न एप्स हूंदियूं आहिनि न मोबाइल में कैमरा सां गॾु तस्वीर खे एडिट करण जे लाइ यस सर Yes. पाण खे जवान करण लाइ पंहिंजे वारनि जो कलर चेंज करण लाइ अखियुनि जो कलर चेंज करण लाइ इनक पाराइण लाइ फिल्टर्स हा पंहिंजो पाण खे स्माइल कराइण लाइ मेकअप लॻाइण लाइ हा Yes, Sir, sir. B6 to common use करना है बार. सही आहे ठीकु आहे ॿार कंदा आहिनि छोकिरियूं कंदियूं आहिनि जवान छोकिरियूं कंदियूं Sir, आहिनि सभी पोड़ा बि कंदा आहिनि पोड़ा पाण खे जवान करण लाइ कंदा आहिनि Yes, sir. है न त अच्छा मूं छा पे चयो त इहे जेको बि प्रोसेसिंग आहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हा दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ that eventually breakups into arithmetic and logic operations. सही है and you know that the computer digital computer can perform arithmetic and logic operations. The every complex operation, image processing or signal processing operation breaks down into breaks up into arithmetic and logic operations. I told you the basic operations in signal processing signals and systems you have already studied. है ना? Okay, so Yes, sir. second outcome is that you as a student, okay, so how you will read this CLO? The way to read is that upon successful completion of the course, a student will be able to apply arithmetic and logic operations to perform desired processing. Okay, now actually you should be able to do all these things at the end of the course. ठीक है ऐं PLOs जो छा आहे PLO जो इहो आहे त you should have these attributes by the time you graduate. सही है Yes, sir. ठीक है the course जी end te you should be able to analyze and now analyze and this objective is on level 4 of Bloom's taxonomy. So analyze 1D and 2D discrete time signals and systems in time, frequency and complex frequency domain. इहो समझ में आयो समझ में कोन आयो Sir, time and frequency domain ते आयो समझ में complex frequency domain समझ में कौन आयो सही है इहो केरु आहे Zoha Slum 15. अच्छा Zoha thank you very much for telling. Anyone else? Okay, so Zoha, signals you studied in time and those were for example x of t. ठीक है Yes. x of t is a signal in time domain. ठीक Yes. and you took their Fourier transform. The Fourier transform का पता छा मिलंदो आहे Frequency domain. if you take Fourier transform of x of t you get Frequency domain.
या x ऑफ f सही है ना, x ऑफ t हूंदो आहे, पाण उन जो फोरियर Yes, ट्रांसफॉर्म sir. कढंदा आहियूं, पाण खे x ऑफ f मिलंदो आहे, त उहो फोरियर Yes, sir. ट्रांसफॉर्म हूंदो आहे, है ना, त दैट इज फ्रीक्वेंसी Yes, sir. डोमेन सिग्नल, सो Yes, सिग्नल sir. इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ यू टेक अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म खां सवाइ ॿियो कहिड़ो ट्रांसफॉर्म पढ़ियो हो? Laplace transform. लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हाणे x Yes, ऑफ t sir. जो तव्हां लाप्लास ट्रांसफॉर्म खणंदा त छा X मिलंदो? of S. x of s, the s is complex frequency domain, s is Okay, complex sir. frequency, Okay, sir. सही है। अच्छा, Yes, त sir. हाणे पाण डिस्क्रीट में भी ईअं ई कंदासीं न, डिस्क्रीट में भी पाण z ट्रांसफॉर्म पढ़ंदासीं ऐं उहो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक। Okay, sir. ओके, सो पाण सिस्टम्स के ब्रेक अप करण सिख, माना यू शुड बी एबल टू ब्रेक अप। हाणे हिकिड़ो आहे त you should be able to break up a complex system into smaller, simpler systems. So you should be able to say that, okay, system D is actually a combination of simpler systems A, B, C. ठीक है? And you should be able to, have skills of Fourier transform. Of course, we will again study Fourier transform, but this time we will see the discrete Fourier transform. ठीक है? ठीक है? Discrete Fourier transform. ओयो, हिन में लिखियो पिया, so transforms में लिखियो पिया DTFT and DFT. Discrete time Fourier transform and discrete Fourier transform. नजर अचे पियो न? Yes, sir. Transforms में. जी sir. You should be able to compute the transforms, convert signal from time domain to frequency domain to time domain, and to complex frequency domain. Okay, now design 1D and 2D discrete time systems. Now this level is level 5. Now you need to design system. You need to design a system with desired properties, with required characteristics. So then last is I should modify this. This is correct. Okay. Because time is only 1D. Time is not 2D. सही है? Yes. Okay, design 1D and 2D discrete systems with desired properties. Fourth is appraise the suitability of given discrete time systems for a given application. Okay, now actually you should be able to tell that if a system is suitable for certain application or not. ठीक है? तव्हां का बि शइ बाए कंदा आहियो बाज़ार में त जेका शइ साम्हूं ईंदी आहे बसि उहा वठी अची वेंदा आहियो? न सर। No, न sir. कोन कंदा आहियो, तव्हां ईअं कोन कंदा आहियो, तव्हां छा कंदा आहियो? सर असां ॾिसंदासीं Compare. कि सुठी आहे क्वालिटी हुनजी, मतिलबु हर शइ सां कंपेयर कंदासीं असांजूं नीड्स छा आहिनि ऐं हुनजी सही, क्वालिटी या केतिरो टाइम हलंदी, प्राइस जी रेंज असां कंसिडर कंदा आहियूं। बिल्कुलु दुरुस्त। तव्हां छा कंदा आहियो, जो तव्हां ॾिसंदा आहियो त तव्हांजा वटि जेके पैसा आहिनि, जेका रेंज आहे उन में तव्हांखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अवेलेबल आहिनि, छा छा मिले पियो मार्केट में, ठीकु आहे? पोइ तव्हां ॾिसंदा आहियो त जेका इन्हनि 4 शयूं अवेलेबल आहिनि, इन्हनि चइनि मां बेस्ट कहिड़ी आहे तव्हांजी नीड्स जे मुताबिक़, ठीकु आहे?
ऐं ज़ाहिर आहे क्वालिटीज़ ॾिसबियूं आहिनि, क्वालिटी वाइज़ कहिड़ी सुठी वधीक लॻे थी, फंक्शनली कहिड़ी शइ वधीक सुठी लॻे थी, फंक्शन्स कंहिं में वधीक आहिनि, वारंटी कंहिं में वधीक आहे, ऐं तव्हांजी नीड्स खे वधीक सुठे नमूने कहिड़ी शइ पूरो कंदी न। ठीकु आहे, त इहो दैट इज़ द राइट आंसर। सो दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन, दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन कबी आहे शयुनि जी, पोइ जेका सभिनी खां सुठी हूंदी आहे उहा चूज़ कबी आहे। ठीकु आहे, दैट इज़ लेवल 6। हाणे तव्हां ॾिसो त these CLOs are mapped with PLOs. And CLO1 is mapped with PLO1, CLO2 is mapped with PLO2, CLO3 is mapped with PLO3 and 5. हाणे ही एक्चुअली छा आहे न, जेको PLO5 आहे इहो सिर्फ़ु मूंखे लॻे थो न हुन में वेंदो न, घणो करे लैब कंपोनेंट में, मॉडर्न टूल यूसेज आहे त इहो लैब्स में बि थींदो, थी सघे थो थियरी में किथे मैप थियल हुजे। बहरहाल लेवल 4 जेको सॉरी CLO4 इज़ PLO4, CLO4 इज़ PLO4। त हाणे पाण PLOs ॾिसी वठूं, PLOs आहिनि, ही PLOs आहिनि 12, टे ही आहिनि ऐं ही 12 आहिनि। ठीकु, टोटल 12 PLOs आहिनि जेके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जेके आहिनि करे वरिता आहिनि, ठाहे वरिता आहिनि। Pakistan Engineering Council actually they have worked out this। and ही जेके पहिरियों आहे त तव्हांखे नॉलेज अप्लाई करणु अचे, you should have sufficient knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and you should be able to apply them to solve complex engineering problems. Second आहे, you should be having ability to understand research literature, analyze complex engineering problems, and formulate the problems. ठीक है, identify the problem, formulate the problem in engineering terms. You need to formulate the problem in engineering terms. ठीक है, layman वांगुर problem कोने ॿुधाइणो, but you need to understand it, it's engineering, and formulate it. And then you should be able to reach conclusions. ठीक है, and if you have understood certain problem, then PLO3 says that you should be able to provide certain solution, design solutions, come up with engineering solutions to complex engineering problems. ठीक है, and of course your solution should be compliant with health and safety standards and needs of values of the culture and society, and environmental considerations also. You need to take into consideration the environment. You should not, your solution should not be harming the society values or environment. Okay, now fourth is investigation, that you should be able to do literature survey to investigate a complex engineering problem in a systematic manner. You should be able to investigate, and you should be able to conduct experiments and interpret the results of the experiment. Interpret the results of drive conclusions. And modern tool usage is ability to create, select, apply appropriate techniques
and modern engineering IT tools, including prediction modeling, complex engineering activities. Okay, so you should be able to, use modern tools of engineering. Sixth is apply reasoning. Okay, so considering all the knowledge that you have from different sources and of different types or different nature, of course, because you need to consider culture, law, local law wherever you are working, and health and safety standards there according to their laws, and the environmental issues they are facing wherever you are working. So all the knowledge that you have, engineering knowledge and their society's knowledge, their culture's knowledge, their laws, you should be knowing everything. And you need to work as a part of a society. Being part of a society, you need to work, and you need to apply reasoning informed by all the knowledge, not only engineering knowledge, but you should be knowing project management, you should be knowing the society, the laws there, working effective there. As a professional engineer, you should be knowing all them. So okay, so environment जी knowledge त तव्हांखे हुजणी खपे, ठीकु आहे। त सस्टेनेबल डेवलपमेंट छा थींदी आहे, सस्टेनेबल तव्हांजो सॉल्यूशन जेको बि तव्हां ठाहियो था उहो केतिरो सस्टेनेबल आहे। इहो तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे। Ethical principles, and actually I told you that in the beginning that you may not agree with all of them, but somehow Pakistan Engineering Council has made them. I actually don't agree with all of them. For example, I think 6, 7 and 8, it's all one and the same thing, which they are telling in different words. But somehow, we need to comply with them. So you need to know the ethical practices, and what is ethical, what is not ethical. I think it's correlated with the 6 and 7, it's same, one and the same thing. Individual and teamwork, and ability to work effectively as an individual or in a team on multifaceted and or multidisciplinary settings. अच्छा, तव्हांखे जेको आहे न, जेकॾहिं तव्हां सर्टेन हिन जो मतिलबु इहो आहे त someone who is electronic engineer, he must also be knowing basics of mechanical, basics of thermodynamics, basics of chemical engineering, chemical processes. त असांखे सिर्फ़ु ईअं कोन्हे त जेको तमामु नेरो नॉलेज हुजे न हिकिड़े ई सफ़ा स्ट्रीम में, पर हिकिड़ी स्ट्रीम में तव्हांखे भले इलाही नॉलेज हुजे, सुठी नॉलेज हुजे, पर बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज तव्हांखे ब्रॉड हुजे, हर डिसिप्लिन जी तव्हांखे ख़बर हुजे। बेसिकली जेका जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज आहे उहा तव्हांखे हुजणु खपे न, त तव्हां मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क करे सघो। यू शुड बी नोइंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीकु आहे, एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। So communication, अच्छा, whatever you know and whatever you do, तव्हां जेको बि कमु करियो था इलाही सुठे नमूने करियो था ऐं तव्हांखे नॉलेज बि सुठी आहे, but if you can't communicate effectively, then पोइ तव्हां सुठा इंजीनियर वरी कोन थी सघंदा। You will not succeed as a good engineer. You will not prove as a good engineer because you won't be able to comprehend other people, others' point of view,
You won't be able to comprehend documents, presentations of other people, and you won't be able to communicate your ideas to other people. सही है, कम्युनिकेशन में ॿई ॻाल्हियूं आहिनि न, साम्हूं वारे खे बि सम्झणो आहे ऐं पंहिंजी ॻाल्हि बि सम्झाइणी आहे। त इंजीनियरिंग प्रेज़ेंटेशन्स तव्हांखे सम्झ में अचनि, तव्हांखे पंहिंजूं इंजीनियरिंग प्रेज़ेंटेशन्स ॾियण बि अचनि। सही आहे, त हाणे इंजीनियरिंग प्रेज़ेंटेशन कीअं थींदी आहे? एनीवन? इंजीनियर वटि कम्युनिकेशन जा टूल्स कहिड़ा आहिनि? मैथमेटिकल मॉडलिंग। सही है। हाणे हिकिड़ो त कम्युनिकेशन टूल इंजीनियर वटि उहो आहे। जी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जीअं थी विया। अच्छा ॾिसो, हिकिड़ो त कम्युनिकेशन टूल इंजीनियर्स वटि उहो आहे जेको हर इंसान वटि आहे, लैंग्वेज। ठीकु आहे, त तव्हां वटि हिकिड़ी ॿोली आहे जेका तव्हां इफेक्टिवली इस्तेमालु करियो। ठीकु आहे न। ॿियो इहो आहे त तव्हां जेको आहे इंजीनियर्स एनिमेशन्स ठाहींदा आहिनि न, एनिमेशन्स ठाहींदा आहिनि, ब्लॉक डायग्राम्स ठाहींदा आहिनि, फ्लो चार्ट्स ठाहींदा आहिनि, ऐं ॿियो छा ठाहींदा आहिनि? नक्शा ठाहींदा आहिनि, मैप्स। इंजीनियर्स मेक मैप्स, ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स। ॿियो छा ठाहींदा आहिनि? ड्राइंग्स of different types, and they use another language. That language is mathematics. So they use mathematical equations. They use mathematical equations. सर प्रोग्रामिंग कौन है? जी सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज थी सके? Programming language we do not use to communicate ideas. Simulation and programming तव्हां कंदा आहियो to do research. सही है ना? But you do not use these things to communicate your ideas. जॾहिं तव्हां पेपर लिखंदा आहियो त तव्हां पेपर लिखंदा आहियो पंहिंजूं आइडियाज़ खे शेयर करण लाइ। हाणे उन में तव्हां ड्राइंग्स ॾींदा आहियो, चार्ट्स ॾींदा आहियो, ग्राफ्स ॾींदा आहियो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा, तव्हां लिखंदा आहियो, लैंग्वेज यूज़ कंदा आहियो, तव्हां इक्वेशन्स ॾींदा आहियो, है न? ॿियो छा कंदा आहियो तव्हां? फ्लो चार्ट ॾींदा आहियो। प्रोग्राम कोन ॾींदा आहियो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोन यूज़ कंदा आहियो, फ्लो चार्ट। ऐं शायदि सूडो लैंग्वेज, समटाइम्स सूडो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सूडो कोड जंहिंखे चवंदा आहिनि सूडो कोड, जेको एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम कोन हूंदो आहे। ठीकु आहे, त उहो इहे शयूं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। ठीकु आहे न। ॿियूं थी सघे थो शयूं हुजनि जेके मुंहिंजे ज़हन में न ईंदियूं हुजनि। ठीकु आहे, पर डिफरेंट ड्राइंग्स हूंदियूं आहिनि ऐं चार्ट्स हूंदा आहिनि, ग्राफ्स हूंदा आहिनि, इक्वेशन्स हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांखे कंहिं बि पेपर में नज़र ईंदियूं। ठीकु आहे, त इहो हूंदो आहे। ऐं नॉर्मल लैंग्वेज हूंदी आहे जेका नेचुरल लैंग्वेज। ठीकु आहे, ओके। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स तव्हां वटि हुजनि ई हुजनि। ठीकु आहे, ऐं टीम मेंबर्स खे मैनेज कीअं कजे, वर्क खे डिवाइड कीअं कजे, मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में कीअं कमु कजे, कमु जेको आहे न विराइबो आहे ऐं मैनेज कबो आहे। त सभु कम, सभु जेके सब टास्क्स आहिनि ज़रूरु जेको मुनासिब वक़्त ते ख़तमु थी वञनि ऐं पोइ प्रोजेक्ट कंप्लीट थी सघे। ऐं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हूंदा आहिनि, ऐं वर्कलोड मैनेजमेंट स्किल्स हूंदा आहिनि, टीम मैनेजमेंट स्किल्स हूंदा आहिनि।
lifelong learning and ability to recognize the importance of and pursue lifelong learning in the broad context of innovation and technological developments. अच्छा हाणे पंहिंजो जेको इल्मु आहे न कंहिं बि फील्ड में उहो त वधंदो थो रहे. So knowledge keeps expanding, increasing. So what you need to do, you need to realize the importance of self-learning and keep learning. ईअं कॾहिं बि कोन थींदो न त तव्हां फील्ड में वञो, तव्हांखे को कमु चवनि ऐं तव्हां चओ इहो त मूंखे सर पढ़ायो ई कोन हो. ईअं त कोन थींदो न. You need to do the task. You need to accomplish the task. You need to learn new things because छा थींदो आहे, हर शइ जो नओं मॉडल अची वेंदो आहे. Everything keeps changing. Newer and newer technology keeps coming. You need to get acquainted with the technology. You need to get acquainted with the new tools in engineering and use them. अॼु जेके शयूं आहिनि उहे असां तव्हांखे सेखारियूं पिया, सुभाणे कुझु ॿियूं शयूं हूंदियूं फील्ड में, नयूं शयूं हूंदियूं. सही आहे. सही कोन्हे? यस सर सही है। Okay, so lifelong learning is an attribute. सही आहे. जंहिं माण्हू में आदत कोन हूंदी आहे सिखण जी, उहे कॾहिं बि सिखी कोन सघंदा आहिनि. ॿिया माण्हू हूंदा आहिनि उहे ओसि ताईं कोन सिखंदा आहिनि जेसि ताईं केरु ज़ोरीअ न सेखारे. हा, ऐं टिया माण्हू कहिड़ा हूंदा आहिनि, जेके माण्हू सेल्फ मोटिवेटेड हूंदा आहिनि to learn new things. So lifelong learning is that motivation. We want to bring a motivation, inculcate a motivation into you so that you keep learning throughout your life. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तव्हां पहिरीं कंहिं ॿुधाई हूंदी, कंहिं टीचर? यस सर। ओके, कंहिं ॿुधाई हुई? सर एक्यू तो पक्का ॿुधाई हुई। ॿियो? सर एनपी ॿुधाई। ठीक है. Okay, so we will see Bloom's taxonomy also. ही बीटी लेवल्स आहिनि. लेवल जेका 1 है उहा नॉलेज है, ऐं 2 जेका है उहा कंप्रीहेंशन है, 3 जेका एप्लीकेशन है, 4 एनालिसिस, 5 सिंथेसिस ऐं 6 इवेल्युएशन. त ही जेके लेवल्स हुयूं उहे हिते लिखियल हुयूं. त C3 जेका है उहा लेवल 3 है, माना कहिड़ी आहे उहा एप्लीकेशन. ऐं 4 जेका है उहा एनालिसिस, 5 जेका है सिंथेसिस है. सिंथेसिस माना कुछ ठाहिण, डिजाइन करण. ठीक. ऐं आखिरी जेको तव्हांजो हो उहो कहिड़ो हो? 6 हो, इवेल्युएशन. ठीक. हाणे पहिरियों जेको नॉलेज है उहो रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐं सेकंड जेको आहे उहो कंप्रीहेंशन आहे, सम्झण आहे. जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि सम्झी वरिती आहे त यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म. सही आहे न? तव्हां जेकॾहिं फ्लो चार्ट सम्झी वरितो आहे प्रोग्राम जो, त तव्हां हुननि खे लफ़्ज़नि में सम्झाए सघो था.
तव्हां हुनखे प्रोग्रामिंग हिकिड़े कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करे सघो था। तव्हां इंग्लिश में जेकॾहिं का शइ सम्झी आहे त तव्हां हुनखे अंग्रेज़ी में सॉरी सिंधीअ में उर्दू में ॿुधाए सघो था। ठीकु आहे, ऐं यू कैन समराइज़। ऐं ॿियो छा आहे, एप्लीकेशन आहे। अच्छा, नॉलेज तव्हांखे आहे ऐं तव्हांखे सम्झ में बि अची वई आहे त तव्हां हुनखे अप्लाई करे सघो था बवक़्ति ज़रूरत। जॾहिं ज़रूरत पवंदी त तव्हांखे यादि हूंदो त मूं फलाणो किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ियो हो, उहो हिते अप्लाई थींदो। तव्हांखे सम्झ हूंदी, सुठी सम्झ हूंदी त तव्हां हुनखे अप्लाई बि करे सघंदा। ठीकु आहे, त जेकॾहिं अप्लाई करे सघो था त इहा हायर लेवल आहे न, सिर्फ़ु सम्झण खां। ठीकु, ऐं पोइ वरी माना तव्हांखे सम्झ में अची वियो हो पर तव्हां वक़्त ते अप्लाई करे नथा सघो त पोइ तव्हांखे यादि ई नथो अचे त हीअ शइ हिते इस्तेमालु थींदी ऐं मुंहिंजो मसइलो हल थी सघे थो। इफ आई अप्लाई दिस थिंग देन यू डोंट हैव एप्लीकेशन स्किल। अच्छा, जेको हायर स्किल आहे अञा दैट इज़ त तव्हां सम्झी वठो त प्रॉब्लम किथे पियो थिए। हा, छाकाणि त जेको रिज़ल्ट्स तव्हांखे रिकॉर्ड न पियूं मिलनि त बार बार तव्हांखे ग़लति नतीजा शयूं पियूं मिलनि त पोइ माना छा थींदो त उहो जेको डेविएशन आहे ऑफ द रिज़ल्ट फ्रॉम द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, उन में जो जेको पैटर्न आहे उनखे तव्हांखे सम्झणो पवंदो त भई असां हीअं था करियूं त हीअं थो थिए, हीअं था करियूं त हीअं थो थिए। त यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इवेंट्स, व्हाट्स हैपनिंग। त तव्हां उन मां एनालाइज़ करे वठंदा आहियो त प्रॉब्लम किथे आहे। ठीकु आहे न। ऐं नेक्स्ट इज़ synthesis. Synthesis is, coming up with a new solution, new idea. नई शइ तव्हां खणी अचो, नओं आइडिया खणी अचो, नओं आर्ट खणी अचो, नओं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जे लाइ नओं सॉल्यूशन खणी अचो। त आर्टिस्ट हूंदो आहे, उहो बि क्रिएटर हूंदो आहे, क्रिएटिव हूंदो आहे। ऐं ही एक्चुअली जेको आहे न, असां वाइल एक्सप्लेनिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वी माइट बी वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंजीनियरिंग। असां इंजीनियरिंग इलाही ॻाल्हाईंदासीं न, जॾहिं ॿुधाईंदासीं त इंजीनियरिंग पिया ॻाल्हाईंदासीं, बट दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ इंजीनियरिंग। इट्स simply applicable to every area of knowledge. It has nothing to do with engineering in principle. This topic, Bloom's taxonomy, is a topic in engineering philosophy, education philosophy. ठीक है, so education philosophy जो topic है, and असां not knowing too much about it, not knowing sufficiently about it, what we do, we keep talking engineering, but actually it is relevant. It is relevant to every education, every education in every field. सही है। हाँ, इन जो मकसद छा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो?